In this video, I am giving information on the disease of blood and cardiovascular system or a circulatory system. You know the circulatory systems in vertebrates. Circulatory systems include the heart, blood vessels, means arteries and veins and capillaries, eh, and blood. And I will focus uh, in circulatory system diseases only the high blood pressure and other the anemia and heart diseases are also, but later I will in next video I will give information, and this time I am giving detailed information on the high blood pressures, symptoms, and causes and treatment regarding this, and what raises the blood pressure in the high blood pressure in the body, and how to prevent blood pressures, and through the plants and other through diets. I will give information. You know, here you see the slides are given in this video, and the key components of the circulatory systems is the heart, is the muscular part, or the fourth chamber pump. Means that is the right atrium and ventricle, and left atrium and ventricle, and that forces blood through the vessels. And the second component is the blood vessels, as the arteries carry oxygenated blood away from the heart, except the pulmonary arteries, and veins return deoxygenated blood back to the heart, and capillaries, they are the thin walled vessels, and when oxygen, nutrients, and waste exchange, means these vessels, circulatory system carries oxygen and hormones to the cells and remove the waste product like the carbon dioxides. And there are two circuits important in the circulatory system. The first is the pulmonary circuit, is the means deoxygenated blood travels from right heart to the lungs for oxygenation and return to the left heart. And systematic circuit, another is the where the oxygenated blood travels from the left heart to the rest of the body and returning to the right heart. And but sometimes disruptions occur to this system and can lead serious health issues like coronary artery disease due to the reduced blood flow to the heart, and another is the stroke. Stroke. Stroke is the interruption of the blood flow to the brain, and heart attack. The blockage in the flow of the blood to the heart, means blockage of blood flow to heart. The heart attack takes place. Means raises, and high blood pressure is the increased pressure against the vessels walls, and this high blood pressure generally varies from person to person depending upon the age, sex, and mental work. The male persons, those who are aged and who are exposed to more mental and physical work, normally high blood pressures than others. In the physiological conditions, the blood pressures increases during the fear, anger, and excitement stages. But a person during sleep and period of the period of rest maintain lower blood pressure, but in during the fear and excitement raises blood pressures. And apart from the psychic and emotional factors, the blood pressure goes up because of the vitiation of vayu. In Ayurveda there are three dosas: Vata, Pitta, and Kapha, and this hypertension or high blood pressure is causes raise due to the vitiation of the vayu. And how the vitiation of the vayu, excessive intake of salt. In modern days, people generally taking fast foods and so spicy foods,
So excessive intake of the salt and lack of exercise, mental worry. Modern days people worry about their children's and their job and very hustle and bustle. So mental worries and sleepiness, but not get proper time for the sleeping and not sleep properly, and the diseases of the kidneys are responsible for the high blood pressures in the old age, especially when the kidney is affected, mm, and blood pressure goes up because of the accumulation of the salts in the muscular part, muscular walls of the arteries, means which carries the oxygenated burden. Arteries, veins, and capillaries are the important parts of the blood carrying. And the because of the accumulation of the salt in the musculature walls of the arteries, their elasticity is reduced. These arteries are elastic, but due to the intake of excessive intake of the salt, elasticity is reduced, and thus even a little force from the heart exert pressures on them. So this is serious problems. Now come to the signs and symptoms. What are the signs and symptoms in the patient? A person with high blood pressures does not sleep well at night, and palpitation, giddiness, feeling instability, lack of equilibrium, and weakness, and impairment of the digestions are experienced generally in the patient. And when high blood pressure become chronic due to the lack of elasticity of the vessels, the capillaries supplying blood to the eyes, especially to the retina, are affected, and which result in the local bleeding and impairment of the vision. And when the condition further aggravates, means becomes serious, it affects the end arteries and supplying blood to the brain. And due to the lack of elasticity, they may rupture and bleeding takes place, and this bleeding is known as cerebral hemorrhage. These days a great problem, cerebral hemorrhage. And the result this result in paralysis in the body. And the center means the brain is the center part. Brain is the central part, main controlling system, and affected by the hemorrhage, and is responsible for the paralysis of the corresponding organs. Means sometimes persons one part of the body and sometimes entire body become paralyzed if you not take proper precautions or medicines. So be careful. And the treatment for the treatment of the medicine through Ayurvedic systems, I am giving information on the how to treat hyper blood pressure. The garlic plant is the bulbous plant of the allium family, and the close relative of the onion. The buds of the garlic bulb is done 1 gram bulbs or taken at one time and take thrice in a day. And this the paste of the garlic means the scientific name of this plant is the allium sativum, and is the bulbous plant, herbaceous. And the paste of the bulb can be mixed with the buttermilk, and is very effective to begin with. Very effective in the hypertension or your blood pressure. And fried garlic in ghee. This reduces the smell of the smell, and easily palatable. Another plant is the sarfganda, or the scientific name of this plant is Rauwolfia serpenta. It's a tropical hot region plant, and generally found in the wild. But these days, population is very rapidly declining due to the high value, highly useful in hypertension and other drugs. So this plant is very rapidly disappearing from the nature. But these days, excessive cultivation and we are
only focusing means the production for the production and for the industrial demands only can be created or can be produced from the cultivation only possible, because from the wild it is almost um, become threatened, highly threatened, critically endangered plant. And this plant is the powder. This plant is also widely used in allopathic system of medicine, and many alkaloids have been isolated from this drug plant. And the main part is the root of this drug is used in the raw state for this hypertension purposes. And the powder is given half teaspoonful of the powder is given three times a day. And tablet also prepared from the concentrated aqueous extract of this drug, and may be given to the patient in a dose of 2 tablets thrice a day. And patients suffering from the chronic hypertension may take another the dhara therapy. You know, this the therapy, and especially in Kerala, herds people are using the dhara therapy. Oil means powering oil from the top to the brain and other parts. They're taking the dhara therapy of the oil is important. And this is possible to cure the high blood pressure through the dhara therapy. And the diet patient should be given should not be given hot and spicy food, and should avoid salt as possible as avoid salt, मीन salty food नहीं लेना चाहिए. दूसरा hydrogenated oils strictly avoided. And patients can be given ghee and butter, um, especially prepared from the cow milk. Now, in Hindi, the circulatory system, और ये परसंचरण तंत्र इसको कहा जाता है, और वाहिका तंत्र भी कहा जाता है, जिसमें कि अंगों का वह समुच्चय है जो कि शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है. मीन्स ब्लड, ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है बॉडी में. तो ये जो है किसके थ्रू होता है, कोशिकाओं होती हैं इसमें आर्टरीज. एंड इसमें दो तरह से, एक तो मेन पार्ट हो गया हार्ट जो पंप का काम कार्य करता है, दूसरा होते हैं इसमें धमनियाँ और सिराई. तो जो इसमें जो प्रसंचरण तंत्र का जो चार बने पार्ट है, हृदय, रक्त वाहिनियाँ, जिसमें रक्त वाहिनियों में आ जाती हैं धमनियाँ और सिराई. और चौथा है मतलब थर्ड पार्ट जो है रक्त, जो कि मेन नेटवर्क है, जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, फ्लो ले आता है, और उसको हार्ट जो है, हृदय जो है, इसको पंप करके भेजता है. तो शरीर में जो ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन को पहुंचाता है ब्लड. और जो अवशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को जो है, मतलब अवशिष्ट पदार्थ जो शरीर में हानिकारक हैं, उनको जो है हटाता है ना ब्लड. मीन्स हार्ट जो पंप का कार्य करता है वो ये काम करता है. तो उसमें राइट, जैसे मैंने 4 पार्ट बताए, हार्ट के 4 चैम्बर होता है, राइट आइटम वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आइटम वेंट्रिकल. तो उसके अलग काम होता है. राइट वाले में जैसे मैंने बताया कि जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वहाँ से जो है ना जो आर्टरी जो हैं, ये एक तो कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कि शुद्ध जो खून होता है away from the except the pulmonary arteries. एंड veins क्या करते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बैक ले आते हैं, हार्ट में ले आते हैं शोधने के लिए. तो हार्ट एक क्या करता है, शोधने का भी काम कर रहा है और पंप का कार्य भी करता है. तो ये है इसकी प्रणाली. और इसमें जो है धमनियों का जो है मुख्य, और धमनियों का पूरा मतलब पूरा ही सर्कुलरी सिस्टम जो है, हार्ट, धमनियाँ और सिराओं, इनसे जो है काम करता है. और इसमें खासकर जैसे पोषक तत्व और ऑक्सीजन कोशिकाओं तक और या पोषक तत्वों को पहुंचाया जाता है बॉडी में, जिससे कि वो ब्लड से ही हमको मेन एनर्जी मिलती है. जानते हैं आप, खाना खाने के बाद ब्लड बनता है बॉडी में, इस तरह से ऐसे वो सिस्टम है. तो वहीं से एनर्जी, तो ब्लड कितना बनता है. जैसे दूसरा इसमें भी जो मैंने बताया कि डिजीज़ ऑफ ब्लड एंड सर्कुलरी सिस्टम की और भी हैं, एनीमिया. जैसे आप जो यदि
ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, और रात को आपको मतलब टाइम पे सोते नहीं, तो एनीमिया की डिजीज़ हो जाती है, मतलब नींद ना आना, और के आयरन की कमी हो जाती है। तो इस तरह से ये हैं, अदर भी डिजीज़ हैं, और हार्ट डिजीज़ है, जैसे हृदय में भी जैसे क्या कहते हैं, जो आर्टरीज का जब उसमें जो वॉल्स होती है ना आर्टरीज के, यानी कि जो धमनियों के वॉल में वो फैट या वो जमा हो जाता है सल्ट वाला, तो फिर उससे क्या होता है, ब्लॉकेज आ जाते हैं, हार्ट अटैक, स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको ये ना बढ़ने पाए, मतलब आर्टरीज ब्लॉक ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा इसमें जो है उपचार के लिए मैंने बता ही दिया कि लहसुन की फली जो है हमारा प्लांट औषधीय लहसुन का पौधा सभी जगह उगाया जाता है, जो प्याज का बहुत ही नज़दीकी कुल का पौधा है। और लहसुन की फली खाने से ये मतलब दिन में आप कम से कम हर समय 1 ग्राम फली मतलब 3 टाइम ले सकते हैं। और इसके अलावा उसका पेस्ट भी बना करके आप छाछ वगैरह के साथ ले सकते हैं। और अगर आपको स्मेल आती है, उसमें घी के साथ रोस्ट करिए। दूसरा सर्पगंधा का प्लांट, जो कि बहुत बड़े जंगलों में पहले मिलता था तो बड़े तादाद में, लेकिन अब जंगलों से तो ख़त्म हो गया, लेकिन पंसारी की दुकान से आप इसको परचेज़ करके ला सकते हैं। उसका पाउडर आसानी से मिलता है, और अमेजोन वगैरह नई नई एजेंसीज ये भी बेच रहे हैं आजकल। तो वो आप वो जो है सर्पगंधा का पाउडर और टैबलेट भी ले सकते हैं, दिन में 3 बार। अगर पाउडर ले रहे हैं तो आधा स्पून जो है 3 टाइम लेनी पड़ेगी आपको, आधा आधा 3 टाइम। और वो उसको लेने से आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम। उसके अलावा आपको एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, प्रॉपर सोना पड़ेगा, डाइट में स्पाइसी फूड नहीं लेने पड़ेंगे। अब ये नहीं कि आपने दवाई खा दिया और हो गया, लेकिन हर समय आपको मोबाइल भी कम चलाना होगा, रात को प्रॉपर सोना, कम से कम 12 बजे तक आप स्लीप, या 1 बजे तक। इसके ये नहीं कि आप स्लीप को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, दूसरा खाना को कंट्रोल करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी थोड़ा, तब जाके आपका ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। और दूसरा, आपको किसी भी तरह स्ट्रोक यानी कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहे कि जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़े। धन्यवाद जी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।